we are going to continue with the unit 6, and that is the next topic is Gokhale Bill of 1912. जब इस सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, सो जो भारतीय लोग थे, इंडियंस, they started to opine, they started to understand that our country basically needs something different, needs something which is on a national level, and that should be the nationalistic level of education. And this level of education should be based on, cultural heritage. It should be based on cultural heritage and even the tradition of the nation which is coming from the past so many centuries. As we have discussed a lot, many things in the previous classes, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में. A great opportunity, students. Just download the OSN Academy application from the Google Play Store, where you will get all the treasure in the field of English literature. And what you will get, students, you will get the video classes, the online classes, the test series, the PDFs and what not at a single destination, and that is OSN Academy. With an experience of 24 years of teaching English literature on a pan-India level, this application is especially made for you, for all the verticals of English literature, home science, commerce, management and HR. So I'm sure, students, you will love to be a part of OSN Academy. Thank you. At the Calcutta conference, which happened somewhere in 1906, there is a name known as Annie Besant. And who was Annie Besant? A Britisher, a women right activist. इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? That throughout the country a national education should be organized. And under this Gokhale Bill 1912, further we will see, we find that education, primary education की need and demand was upsurging like anything. And this need and demand which was upsurging, that was for the primary education, it was more given impetus, strength, command by Maharaja Rao Gaikwad, who belonged to Baroda. And this entire thing inspired Gokhale. So Gopal Krishna Gokhale, who was he? He was a national leader. And apart from being a national leader, he was also a very active member of the Indian National Congress. He was elected as the president of the Indian National Congress in 1905. He was a professor and a principal of a very, very, reputed college known as Fergusson College, Pune. Even many students of OSN Academy who have been studying in Fergusson College in MA English departments, they have qualified NET under my guidance under OSN Academy. So I know Fergusson College very well, that too in Pune. And he also became a non-official member of the British Imperial Legislative Council in 1902. I am talking about Krishna Gopal Gokhale. Fine. So there is nothing, there is no rocket science in this unit, but it is just to understand the dates, the things, and इन्हीं में से questions बन जाते हैं students. Fine. तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत इस यूनिट में खास तौर से नहीं है. And Gokhale was basically the first person जिन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट किए. ही हु यूज्ड टू गिव
a lot of efforts and mechanism to introduce the free and the compulsory primary education in the I mean a very sequencing manner. क्योंकि क्या होता है कि primary education ही अगर आपकी weak हो गई, then it is of very to be cared of. And he struggled a lot that there should be primary education which should be compulsory in India, and it also basically forms a very important and integral part in the struggle of the country independence during the British rule. So this all happened, and this all is to be taken into account as far as the Gokhale bill is concerned. And as far as this thing, you can say द प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली क्या हुआ कि गोखले ने एक बिल को प्रेजेंट किया, वेयर आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कोई बिल प्रेजेंट होता है, एंड देन देयर इज अ फाइट against the government which has a lot of recommendations from here and there, and there he has to fight for the compulsory primary education in areas of students, basically girls. There should be a fixed percentage of attendance, then the free attendance, the free education to the weaker sections of the society, and the compulsion of the education for the boys of a younger age, that is maybe 6 to 10. सो जब ये बिल गया तो गवर्नमेंट ने इस पर रिएक्ट किया और एक कमिटी बनाई, उसमें 15 मेंबर्स रखे फॉर एग्जामिनिंग दिस थिंग. फिर उसके बाद इट वाज सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, इट वाज सेंट टू द यूनिवर्सिटीज, इट वाज सेंट टू द लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज, एंड स्लोली एंड स्टेडीली बहुत पावरफुल आर्गूमेंट्स हो गए इन सपोर्ट ऑफ दिस बिल, दैट टू बाय रेज बाय गोखले. लेकिन क्या था कि अल्टीमेटली द गवर्नमेंट वाज इन द बैक एंड, यू कैन से दे वर रिफ्रेनिंग टू एक्सेप्ट द बिल. सो जब गवर्नमेंट रिफ्रेन करती है किसी भी चीज के लिए तो वो वोट पुट करती है, एंड सो इट वाज पुट टू वोट एंड वाज डिफीटेड बाय 38 वोट्स टू 13. 38 वोट से हार गई, उनको 13 मिले. So it was not a very big shock to Gokhale, and he expressed his favor in the following words. बहुत सारे चीज़ों को उसने एक्सप्रेस किया. तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया अपनी बातों में, अपने कोट एंड कोट में कि ओ माई लॉर्ड, आई नो दैट माई बिल विल बी थ्रोन आउट बिफोर द डे क्लोजेस. आई मेक नो कंप्लेंट. आई शैल नॉट इवन फील डिप्रेस्ड. And we, the present generation of India, can only hope to serve our country by our failures, and the men and women who will be privileged to serve her by their success will come later. So ये जो बिल था, though it was defeated, but it was a heroic defeat. मतलब एक जिसको कहते हैं ना हीरोइज्म से डिफीट हुआ, तो वो डिफीट मिली. So that is the entire thing about the Gokhale bill, which you have to study. Fine students. Now, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैल्डर कमीशन पे. हमको याद है पिछले सेशन में भी पूछा गया था. सैडलर कमीशन, इसको हम लोग कहते हैं द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1917. ये क्या हो गया? कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन इन शॉर्ट. सो दो स्टूडेंट्स who have my study content, I have written very properly there about these units, because these units are very short, particularly and to the point I have written, which I think you may not find in the market books. कि एक नया next stage है, and that is for the appointment of the Calcutta University Commission in 1917, as I have told you, and this was held under the chairmanship of late Sir Michael Sadler. इनका नाम था सर, जैसे ये नाम भी पूछ सकते हैं कि किसके चेयरमैनशिप में हुआ, तो आप बता सकते हैं सर माइकल सैडलर. सो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते भी हैं, आप इसको देख सकते हैं. एंड
ये जो कमीशन था ये क्या चाहता था आपको पता है? दिस कमीशन एक्चुअली विश्ड एंड dreamt of making the changes in the secondary education, or they opined that the improvement of the secondary education is very much essential for the improvement of the higher level education. देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी आएंगे, सेकेंडरी से हायर जाएंगे. So we will take all the major steps to improve the education system from the very deep roots. Then the second step will be important. वहाँ पे भी हमें improvement करने की ज़रूरत है. Then the higher education will be improved, and thus it is known as the university education. And there, when we give that high level of education, there the professors, the teachers, they come and they teach to the high level education, जो आज भी हमारे भारतवर्ष में है. So बहुत सारे कमीशन ने recommendations किए students, and you can find it out all those things which I have given to you in your books also, in my study content also, कि इस कमीशन ने बहुत सारे important recommendations किए. और पहला रिकमेंडेशन किया कि जो स्कूल कोर्स है वो कम से कम 12 साल का होगा. दैट टू विल बी ऑफ 12 इयर्स. कि जब हम मैट्रिकुलेशन कर लेंगे, व्हेन आई विल बी कंप्लीटिंग अवर मैट्रिकुलेशन, एंड देन द स्टूडेंट हैज टू पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, and that is very normal that he has to pass from some intermediate college, and then it will be providing for the admission in the arts, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग, एज जैसा कि आज भी हो रहा है. एंड दीज कॉलेजेस विल बी रनिंग एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और विल बी अटैच्ड टू सम हाई स्कूल्स. सो इनमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं और आज भी बहुत सारे नियम कानून पुराने हैं, कुछ इसमें अमेंडमेंट हो जाते हैं. सो एक डिवाइडिंग लाइन उन्होंने बना दी बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड बिटवीन द सेकेंडरी कोर्सेज, और उसको कौन देखेगा? इन द सेम वे दे हैड मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दिस इज ऑल थिंग्स विच हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. जो 3 साल का डिग्री कोर्स होगा, honors courses will be different from the regular pass courses. Then autonomous institutions will be there which will be giving more encouragement. आज भी देख लीजिए इंडिया में बहुत सारे there are autonomous institutions which are working very good and they are very known. If compared to the government institutions, even autonomous institutions are much more taken into consideration by the students. फिर उन्होंने सेंट्रलाइज्ड टीचिंग और रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए. देन विमेन एजुकेशन वाज वेरी मच एनकरेज्ड. बहुत सारी फैसिलिटीज बना दी वेयर द टीचर्स विल बी टॉट, द टीचर्स विल बी ट्रेन्ड, देयर विल बी अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. देन द विमेन एजुकेशन इन कैलकाटा यूनिवर्सिटीज बिसाइड्स द अदर फैसिलिटीज, वो भी उन्होंने कर दिया. स्पेशल बोर्ड ऑफ विमेन बना दिया उन्होंने. सो ये बहुत सारी चीज़ें की कमीशन ने, जिससे कि द प्राइमरी, द सेकेंडरी एंड द हायर एजुकेशन सिस्टम शुड कम आउट मोर ब्यूटिफुली एंड वर्सिटैलिटी. एंड इस सैडलर कमीशन रिपोर्ट की बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने आपको लिख के भी दिया है अपने मटेरियल में. आप उसको पढ़िएगा, उसमें देखिएगा. बहुत ज़्यादा इसमें कोई स्टैटिस्टिकल डेटाज नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट 1 time or 2 times रीडिंग दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. फाइन. सो ये जो फीचर्स हैं कमीशन रिपोर्ट के, सैडलर कमीशन रिपोर्ट के, इसको आप पढ़िएगा. इसमें ये दिया है कि इन्होंने सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज़ टू मेक द लिटरेसी लेवल मोर हाई. और 5 साल का जो पीरियड है 1916 से लेकर के 1921 तक, इन दिस पीरियड ऑफ 5 years there will be 7 more universities which started, and that too was the Patna University, the Mysore University, the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University, Decca University, Lucknow University, and even the Osmania very famous Hyderabad University. इनके अलावा भी students, individuals, colleges and universities were set up, and many other women universities, Vishwa Bharati University, Shanti Niketan, Rabindranath Tagore ने भी इसको establish किया. So all these things were the essential features of the Sadler Commission. Fine. So now we will study what was the status of English after independence. Status of English after independence in India. ठीक है.
तो आप देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, only English was supposed to be or taken for the level of medium of instruction. It was the first language, and English was supposed to be the queen of languages in the whole country because of the Britishers. And you can say that इस समय पे lot of effort was done to develop and to replace Hindi instead of English. 1963 के आसपास, in 1963 approximately, the parliament, they passed a bill, and in that bill, according to that bill, the English was declared to be the associate official language of India, but that too for a not a definite period, but for a